पवन जी, मैं सोच रहा था आज की वो एक एलन वॉट्स का एक यूट्यूब पे वीडियो है जिसका मैंने थोड़ा एक्सट्रैक्ट निकाल के अपने ब्लॉग पे डाला था। तो उसे उसमें कुछ ये इंटरेस्टिंग बात है अबाउट सेल्फ डेवलपमेंट एंड हाउ इट इज नॉट पॉसिबल, हाउ सेल्फ डेवलपमेंट इज नॉट रियली समथिंग विच कैन बी वर्कड टुवर्ड्स। इट्स वेरी इंट्रिगिंग आइडिया। तो वो आई जस्ट रीड दिस आउट अ लिटिल एंड देन वी कैन टॉक अबाउट इट। So इसमें he says, Alan Watts, he says, the whole idea of self-improvement is a hoax. What happens if you know beyond any shadow of doubt that there is nothing you can do to be better? It's a kind of relief, isn't it? We are so used to making things better, leave the world a better place than we found it. I want to be of service to other people, and all these dreadfully hazy ideas. But supposing instead of that, seeing that there isn't anything we can really do to improve ourselves or improve the world, if we realize that this is so, it gives us a break in the course of which we may simply watch what is going on. Nobody ever does this, you know. Therefore, it sounds terribly simple to watch what's happening and what you are doing by way of reaction to it. Just watch it happen. And don't be in a hurry to think you know what it is. Look at things without fixing labels and names and gradations and judgments on what happens and what we do. Then it may be that when you are in this way freed from busybodiness and being out to improve everything, that your own nature will begin to take care of itself, because you are not getting in the way of yourself all the time. You will begin to find out that the great things that you do are really happenings. Thoda sa I'll just skip that part. Then he says, all growth you see is fundamentally something that happens. But for it to happen, two things are important. The first is that, as I said, you must have the technical ability to express what happens. And secondly, you must get out of your own way. But right at the bottom of the whole problem of control is, how am I going to get out of my own way? And if I showed you a system, let's all practice getting out of our own way, it would turn into another form of self improvement. And we find this problem repeatedly throughout the entire history of human spirituality. It is only as getting out of your own way ceases to be a matter of choice when you see that doing something about your situation is not going to help you, and when you see equally that trying not to do anything about it also is not going to help you, you are nonplussed and you are simply reduced to watching. So this is what he's saying. It makes perfect sense completely. I mean, you see, Indian spirituality में तो ये हमेशा से ही रहा है ना. You take any of these spiritual poets, you know, जो हमारे भक्ति काल के हैं, तो वो यही इसमें ये भाव तो बहुत है कि जो हो रहा है वो हो रहा है और देखते रहो उसको. और whether you look at Krishnamurti, whether you look at Nisargadatta Maharaj, whether you look at Brahman, I mean, ये भाव तो बहुत important है कि चीजें हो रही हैं, things are happening, and all you can do is be aware of them. You can watch it, you can observe it, and see your insignificance in a way, that how little you can, whenever you try to do, you actually come in the way. So the probably the skill lies in, I mean, doing to छूटता नहीं है ना वैसे, doing in one sense you are doing all the time, but there is a doing with effort, doing with planning, doing with much of thought out doing, और दूसरा doing है which is a spontaneous doing. So I think this is more about spontaneous doing, that you just flow with it and you watch it, and then you don't, that spontaneous doing is actually not doing, it is also happening, because then what you're doing is only happens, it comes out naturally from your being. So being on one side and doing on one side, but the two get aligned completely, then the doing is flowing out of you from within to without, something like that. So it makes, I mean, this is in total sync with what our great masters have said, you know. नहीं, क्योंकि there is this whole movement of self improvement and you know कि आप योग कीजिए, आप साधना कीजिए, आप उसके उसके रास्ते हैं बहुत सारे, and people get caught in them. No, lots of, you see that in these cults that form around uh, I don't know, all spiritual paths. There are this correct ways of going about something and wrong ways of going about something. I think he's pointing to that also कि एक सिस्टम सा बन जाता है, उसमें आप फंस जाते हो, चाहे वो मतलब कोई भी हो, चाहे वो विपश्यना हो, चाहे वो कोई भी, मतलब नाम नहीं लेना चाहिए किसी का, लेकिन लोग
फाइनली सिस्टमों में फंस जाते हैं कि लगता है कि इस तरीके से करने से कुछ बात बनती है, नहीं तो बात बनती नहीं है। या आई थिंक दैट इज व्हाट। जो की वर्ड देयर व्हाट यू आर सेइंग इज फंस जाना। हाँ यू हाँ सी, मतलब प्रॉब्लम न विपश्यना में है, न योग में है, हाँ। न प्रार्थना में है, न भजन में है, न न कोई और भी, कोई भी जो भी कर, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि आप उसमें फंस गए, वो प्रॉब्लम है। आप वो कर रहे हैं, ठीक है, आपको उसमें से कुछ आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपको कुछ हो ही रहा है। वो ये चीज जो आदमी का कहीं ना कहीं हम लोगों का अहंकार है कि हमारे करने से होता है, जबकि ये रियलाइजेशन जरूरी है कि हमारे करने से नहीं हो रहा, तो ये तो हो ही रहा है। अब ये जो करने से हो रहा है, करने के बगैर भी हो रहा है, ये एक बहुत इसको ऑब्जर्व ही किया जा सकता है कि हमारे करने जो हम करना बोल रहे हैं उसको क्या है। इसी हम खाना खा रहे हैं, वो करना है। मैं बात कर रहा हूं, ये भी करना है। मैं चल रहा हूं, फिर रहा हूं, ये सब करना है ना। लेकिन हम जो भी ये कर रहे हैं, ये एक तरह से स्पॉन्टेनियसली हो रहा है। बट एक करना वो होता है जो हम जो जो है उसको बदलना चाह रहे हैं। व्हाट इज वी वांट टू चेंज इट, एंड चेंज इट अकॉर्डिंग टू आवर डिजायर, एंड वी आर नॉट normally watching where is that desire to change things in a certain way coming from. एक तो ये ऑब्जर्व करने की वस्तु है कि when we want to change what is there, then where is that whatever we have a vision of कि इसको ऐसे चेंज होना चाहिए, ऐसे इसका हमारे दिमाग में तस्वीर है कि ये ऐसा होना चाहिए, तो वो कहाँ से उसकी उत्पत्ति हो रही है, वेयर इज इट कमिंग फ्रॉम। हाँ, ये एक ऑब्जर्व करने की चीज है कि ये जो एक चीज है, और जो है उसको हम कहीं से ये होता है कि ये ऐसा होना चाहिए, तो जो है वो स्वीकार्य नहीं है, और वी वांट टू चेंज इट टू फ्रॉम ए, वी वांट टू चेंज इट टू बी, और ए टू A1 और A2. What needs to be observed, or what can be observed, is where is this desire coming from? Where is this A1 or B coming from? Why is A not acceptable, and why do we want to go from A to A1 or A to B? Where is this desire coming from? If we are able to observe, then we will find that this perhaps has deep links with our deep-rooted conditionings and our assumptions. हमारी मान्यताओं से, हमारी बहुत गहरी धारणाओं से इसका संबंध है। एक तो ये बात है, उसको ऑब्जर्व किया जा सकता है। तो ये ऑब्जर्व करने से बहुत बार हो सकता है आप अपनी ही कंडीशनिंग से बाहर निकल जाएं, जस्ट बाय शेयर ऑब्जर्वेशन। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, जस्ट बिकॉज वो अभी तक वो ध्यान में नहीं थी। You were not aware of those deep conditionings and those deep rooted assumptions. And when they come to light, just the very fact that they come to light, that it has the power to dissolve itself or to weaken that. That is something that needs to be seen. Second is, which is even more important, is that in this process of when we observe that change is happening, the things are not static. It's the visible world is changing all the time, and our inner world is also changing all the time. The way we think, the way we feel, the way we desire, the way we imagine, all this is also changing. The change is a constant. ये हो ही रहा है। ये डेलिब्रेट हम कर सकते हैं, और कभी कभी ये नहीं भी करें तो भी हम खाली ऑब्जर्व करते हैं, तो हम पाते हैं कि ये तो चेंज हो ही रहा है। अब ये जब हम कुछ डेलिबरेटली करते हैं, तो उसमें ये देखना चाहिए कि हम उसमें सफल होते हैं, विफल होते हैं। एक बात, अगर सफल होते हैं, सफल होने का मतलब इतना ही है कि जैसा हमने सोचा वैसा हो गया, इसको हम सफल कहते हैं। जैसा हमने सोचा वैसा नहीं हुआ तो हम इसको विफलता कहते हैं।
लेकिन इसमें जो डीपर लेवल पे ये देखने की बात है कि जो हो रहा है, ये जो बदलाव हो रहा है, उस बदलाव में am I the only one playing a role? या ये सिर्फ सिर्फ मेरे कारण से हो रहा है? कम से कम पहले स्टेज पे ये देखें कि क्या सिर्फ ये मेरे कारण से हो रहा है? तो अगर ये सिर्फ मेरे कारण से हो रहा है, तो अनहोनी नाम की कोई चीज नहीं है, अनसर्टेनिटी नाम की कोई चीज नहीं है, अचानक नाम की कोई चीज नहीं है। पर ये हमको मालूम है कि ये हमेशा ओमनी प्रेजेंट है। The possibility of things not happening the way I plan are omnipresent. The possibility. इसका ध्यान इस पे जब नहीं होती, तब देखने की, उसको एनालाइज अगर हम करें तो हमको पता चल जाएगा कि बहुत कुछ ऐसा उसमें नहीं होने के कारण में ऐसा बहुत कुछ था जिस पे हमारा कोई वश नहीं था, जिस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं था। This is to be observed repeatedly. I am only sharing what I have tried to do. Then I am fairly convinced that I am not the doer. By seeing this, realizing that there is a domain of the unknown, from this unknown comes this uncertainty, this unhoni, which is omnipresent. This works both ways. Sometimes what we desire just happens without our doing anything. वो भी हो सकता है, you know, आपको कोई लॉटरी की टिकट लग जाए, you know, for instance. I am not being fatalistic. I am just trying to explain a phenomena which is staring us in the face, and our only job is to see this. You see, which is not to say that we will not do any planning in short term. For instance, if I have to go to Banaras in October, I will do some planning about buying a ticket and planning my trip to Banaras. Definitely, I will do that. But if it doesn't happen for some reason, then I'm not going to tear my hair about it. You see, I will take it in my stride. That is the only difference in attitude which will come. But short-term planning, is necessary. But this being obsessive about, things should happen the way I want all the time. This obsession is pathological. This is one thing. Secondly, ये जो self improvement वाला आपने पढ़ा, तो इसमें थोड़ा और क्या है कि देखने की ये जरूरत है कि where is this desire coming from? Where is this desire? एक बात हो गई कि I am not the primary doer. अब मैं दूसरी बात पे आ रहा हूं कि ये this desire to change yourself, where is it coming from? What do you want to change? Why do you want to change? ये सोचने की बात है, which is not to say कि आप ये सोच रहे हैं तो गलत सोच रहे हैं. All I'm saying is that this needs to be seen for what it is. Where is this desire to change coming from? What is it that you want to change? Why is it that you want to change? Again, I'm talking of only sheer observation. What I'm saying is, observation is not considered as doing. कि हमारी जो ट्रेनिंग है दिमाग की, उसमें जब हम इंद्रियों को चलाते हैं तो उसको डूइंग बोलते हैं. खास करके हाथ पांव और मुंह को चलाते हैं तो डूइंग बोलते हैं. इसके अलावा अगर हम हाथ भी नहीं चला रहे, पांव भी नहीं चला रहे, मुंह भी नहीं चला रहे, तो हम उसको डूइंग नहीं कह रहे. ज्यादा से ज्यादा थिंकिंग को डूइंग कहते हैं. ऑब्जर्विंग, कॉन्टम्पलेटिंग को डूइंग नहीं कहते. ध्यान देने को डूइंग के क्षेत्र में नहीं आता. मैं ये कहता हूं कि
ये इसको अगर हम डूइंग मान लें कि ये भी डूइंग है, पेइंग अटेंशन इज ऑल्सो डूइंग, लेट्स से 1 मिनट मान ले, तो दैट इज अ वेरी पावरफुल वे ऑफ अनरावलिंग थिंग्स both within and without. Secondly, this paying attention has the, the probably the kunji बोलते हैं ना उसको, वो क्या जो ट्रिक है, हाँ, वो मतलब the act of observation change, वो बोलते हैं ना, जैसे act of observation is changing the observed. ये मजाक नहीं है, मतलब दिस इज वेरी सीरियस. आई फील दैट ये, क्योंकि हम इसको डूइंग नहीं मानते हैं पहले तो, पर अगर हम इसको एक बार मान लें कि यही डूइंग है, ये भी डूइंग है, तो वो जो एक्ट है वो itself has the power to change what is being observed. Even a physical object which we are observing out there is actually a reflection of that object within you that you are seeing. You are not seeing that object out there. You are seeing the reflection of that object within you. That seeing is not pure. It is contaminated. The contamination is there between your seeing and that object. There is something called the drishti. This drishti, if it is flawed, then we do not see the object the way it is, but we see it otherwise. So the sheer act of observation is actually seeing, sheer observation is actually able to see both the drishti and the distorted object. And what I'm proposing is that this sheer act of observation has the ability to alter both the drishti and therefore the object, because the drishti and the object are connected. जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि. दृष्टि गड़बड़ है तो सृष्टि भी गड़बड़ी दिखती है. तो ये ऑब्जर्वेशन, एक्चुअली ये रियलाइजेशन होना जरूरी है कि ये जो मैं देख रहा हूं वो ऑब्जेक्ट को नहीं देख रहा हूं, मैं एक्चुअली अपनी दृष्टि को देख रहा हूं. अच्छे बुरा, बढ़िया घटिया, ये जितने भी विशेषण है, all these adjectives, when we are doing evaluation of the one that is we are observing, this evaluation is happening by our drishti. It is not an objective evaluation. It is a subjective evaluation. And वो ये अगर awareness रहे कि मैं जो भाव आ रहे हैं ये मेरी दृष्टि से जनित होके आ रहे हैं. They are coming out of my drishti. तो उसमें और मेरे बीच में एक डिस्टेंस पैदा हो जाता है. If we are aware of this, I do not become that. My evaluation doesn't become me. My evaluation is out there, knowing that this is coming out of my drishti. So I can objectify my evaluation. I do not stick to it in the sense that this is it. ऐसा ही है. No. ऐसा मुझे लग रहा है at this moment. This is subject to change because my drishti is changing, can change. ये awareness के साथ जब हम देखते हैं, then something happens. So what I'm saying is the problem lies in not treating observation as an activity, as a doing. Now there is no technique to it. This is what I have to say to this. This is what I feel initially when you read this. But I'm in complete sync with it, because I feel we are not the doers at all.
We are only a nimitta at best. Even the thought which arises in my mind, even the desire which arises in my mind, anything which is happening out there, उसमें मैं उससे संचालित हो रहा हूं और वो कंटामिनेटेड है. ये अवेयरनेस लाई जा सकती है. I mean, इतना ही फर्क है कि we are not aware of it or we may become aware of it. And there is a big difference between being aware of it and being not aware. तो एक ये सोच रहा था कि तो इसमें ये गेट आउट ऑफ आवर ओन वे जो बोल रहे हैं ये Yeah. तो कि जो मतलब कि जो अपनी मान्यताएं हैं उसमें से हटके, दैट इज गेटिंग आउट ऑफ आवर ओन वे का मतलब उस तरीके से है. हाँ, वो उस तरह से है. दूसरा ये भी है कि ये जो करने की बात है ना, ये जो सेल्फ इंप्रूवमेंट में करने की बात है, वो करने में ऑब्जर्वेशन को स्थान नहीं है, उसमें कोई प्रैक्टिसेस को स्थान है. नॉर्मली स्पीकिंग कोई ना कोई प्रैक्टिस है. प्रैक्टिस मीन्स डूइंग. आप कुछ ना कुछ कर रहे हैं. मैं ये कह रहा हूं कि ध्यान देना डजंट मीन कि आंख बंद करके आलती पालती मार के कमर सीधी करके बैठना. हम इसके अगेंस्ट में नहीं बोल रहे हैं. Again, I have to be very careful because I'm not saying this is all bakwas. That is fine, but it is not just that. Don't get stuck with it. That is what he is saying. You can do anything, यार. क्या फर्क पड़ता है? करिए. उससे कुछ मिलेगा, कुछ शायद कुछ दिमाग के पर्दे खुल जाएं, बढ़िया चीज है. लेकिन वो जो उसमें फंस जाना is the problem. After any method, anything which is a means. A method is a means. A subject is a means. Instrument is a mean. A practice is a means. A category is a means. कोई भी तरह से अगर आप मीन्स में फंस गए, उसको आपने रियल मान लिया, क्योंकि उसमें आपने स्थायित्व दे दिया, जबकि वो टेम्पररी है, वो ट्रांजिएंट है. ट्रांजिएंट को स्थायी मान लेने में प्रॉब्लम है. गेटिंग स्टक विथ इट इज द प्रॉब्लम. Why do we get stuck with it? Because हमने उसको जो चीज बदलने वाली चीज है, जिसका बेसिक स्वभाव बदलने वाला है, क्योंकि वो इंस्ट्रूमेंट है. वो इंस्ट्रूमेंट आज एक इंस्ट्रूमेंट काम आएगा, कल दूसरा इंस्ट्रूमेंट काम आएगा. इंस्ट्रूमेंट की जो वो है वैलिडिटी है, वो स्थिति परिस्थिति निर्धारित करती है. Your circumstances decide the validity of the methods, the instruments, the pedagogy, the subject matter, everything. ये डिसाइड करती है आपकी स्थिति परिस्थिति जो एवर चेंजिंग है. So in a different circumstances, you will use a different method. The object may remain the same, but you may change the method. So the difference between the object and the subject of reaching there, object and the category through which you reach there, object and the instrument through which you reach there, object and the method to which you, this needs to be डिफरेंशिएट. इसमें एक डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस है, उसको देखना पड़ेगा. एक एटर्नल है, एक ट्रांजिएंट है. ट्रांजिएंट को ट्रांजिएंट की तरह ही ट्रीट किया जाना चाहिए. ट्रांजिएंट को हम अगर एटर्नल की कैटेगरी में डाल देंगे तो वही प्रॉब्लम.